Yes, but I'm audible to you. यस, बताइए क्या डाउट था आपको, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था कि सर इंटरव्यू में जब मॉक दे दे सर मतलब जो कौन से पैरामीटर में कितना मार्क्स आ रहा है ये एनालिसिस करके समझाने के लिए ताकि सर मेरा गलती कम हो सके। यस, आप जितने मॉक देंगे उतना ही बेनिफिट होगा। आप मॉक कम देते ना, आपने अभी 2 ही मॉक दिए हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया लग गया होगा। वो चीजें तो आप जितने, आप लास्ट टाइम में आपका 11 को है ना आपका इंटरव्यू, तो आप कब जाएंगे वहां से? ठीक सर। ये सर। जाएंगे कब आप अपने यहाँ से, वेस्ट बंगाल से दिल्ली? सर 9 तारीख से सर। 9 12 बजे से दोपहर। यस, तो जितने ज्यादा मॉक देंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। आप देखिए सबने मॉक दे चुके हैं, सबके मॉक हो गए 15-15 लगभग। 36 में से 20 कैंडिडेट यहाँ से हैं, 20 सब मॉक दे चुके हैं, क्योंकि वो ओके 1 महीने से मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगभग 500 से ज्यादा घंटे में मॉक ले चुका हूँ जीएसआई के। ओके सर। आपके में जितने जुड़े हुए लोग हैं, आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें आपको पता होगा सब मॉक दे चुके हैं ये सर। ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा देखो प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होता है मॉक इंटरव्यू से, यही है मेन पर्पज, इसलिए मैंने आपको बोला हुआ है। सर मैंने प्रैक्टिस किया था सर मतलब जो साहिल भैया के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था फिर और का और सर सागर ये 3 4 लोगों के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। कैसे कैसे प्रैक्टिस किया आपने? इनके साथ प्रैक्टिस कैसे किया है, क्या क्या मेथड क्या है आपका? सर मेरा मेथड नहीं है सर वो साहिल भैया ने मतलब जो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था उसने सर साहिल पॉपली सर ने जब इंटरव्यू दिया था किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे थे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था तो वो सर मुझे उस तरीके से मुझे पूछा था और मैं भी दूसरे से फोन कर समझने की कोशिश किया सर 4 5 6 7 लोगों से मैंने बात किया कि किस तरीकों का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस हिसाब से मैं भी 2 4 क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा था तो साहिल भैया से। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी ना, जितने अभी हुए हैं बहुत से लोगों की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट तो मैंने सारी शेयर कर दी। हाँ जी सर लेकिन मतलब जो मान लीजिए सर जिसको मार्क्स बहुत कम आए तो उनसे भी बात किया कि क्यों मार्क्स कम आ सकते हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स जिसको मिला है उनको 146 भी मिला सर एक सर का तो उनसे भी मिला कि क्यों उनका मार्क्स इतना हाई आया ये भी समझने की कोशिश किया सर। किन से मिले आप? सर मैंने मिला सर तो वो उड़ीसा की एक लड़की के साथ 2019 में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया कि उनका मार्क्स बहुत कम आए थे 99 या फिर 90 इस रेंज में मिला था। और मैंने सर शुभ्रकांति मंडल सर को पूछा था उनको इंटरव्यू में 146 मिला था 2014 में। और सर 2000 मतलब जो सिद्धार्थ और अभिषेक जी से तो बात किया ही उन लोगों का 130 प्लस मिला था 133। फिर संजय दास कुंतल हलदार इन लोग जियो साइंटिस्ट हैं सर उनसे बात किया तो उन लोगों का 138 139 मिला था मार्क्स। तो कैसे मिला कि किस तरीके से प्रिपेयर किया उनसे बात किया सर। तो इन्होंने क्या मॉक वगैरह कंडक्ट कराए आपको? नहीं सर नहीं कराया मतलब जो आइडिया दे दिया कि किस तरीके से उन लोग प्रिपेयर किया था। तो फिर शाहिल भैया से उनके साथ प्रैक्टिस किया उनका तो एक्सपीरियंस है पहले से तो ये तो उनका सेकंड इंटरव्यू अटेम्प्ट है। और सागर धनराज से भी बात किया वैसे। और शायद सागर भौमिक जो है सर और तो मन्ना उन लोगों के साथ मतलब जो साथ में मिलकर तैयारी भी किया कोई टॉपिक ले लिया तो सर वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था मैं 2 4 क्वेश्चन तो उनको भी पूछ रहा था ऐसे किससे? करके तैयारी किया था। कैसे? देखो जो लोग सर सिलेक्ट हो मान गए उनका लीजिए। मेथड अलग है। देखो टॉपिक यही रहते हैं। मेन इंटरव्यू का मेन पर्पज ये रहता है कि आप रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये मायने रखता है। सबसे मेन ये होता है। किसी के 40 मार्क्स आए हैं, 140, किसी के 130 आए हैं, किसी के कितने आए हैं। जितने सिलेक्टेड हैं ये जो है,
जो वो क्या नाम था, सिद्धार्थ जैन और ये अपेक्षा, इनसे आपने बात नहीं की? जो लोग सिलेक्टेड है उनसे नहीं की? हाँ जी सर, उन लोग तो उनसे उनसे तो बात किया ही सर। सिद्धार्थ से तो मुझे तो मेरा एक मॉक भी लेना चाह रहा है, तो सोचा कि उसके पास भी दे दूं सिद्धार्थ। हाँ। अभी सर जी से बात किया सर, उनसे भी बात किया, तो उन लोग के कैसे प्रिपेयर किया उनसे भी बात किया, बताया उन लोगों ने। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मॉक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मॉक। कोई भी बताता है वो अलग इशू रहता है, अगर आप एक जूम पे एक मॉक देंगे ना, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है। और आप क्या कीजिए, आपके पास लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं मोबाइल से? सर मोबाइल से सर। तो अगर लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए, उस पर रिकॉर्ड हो जाता है मोबाइल पे। सर रिकॉर्ड तो मतलब तो मैंने नहीं किया सर, एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं सर। तो कोई फ्रेंड वगैरह हो उसका ले लो। इधर तो मतलब जो किसी के पास मतलब जो कंप्यूटर है घर में, लेकिन सर किसी के पास वैसे लैपटॉप नहीं है सर। डेस्कटॉप है? मतलब जो डेस्कटॉप है सर, मेरा पास नहीं है, मेरे पास फोन ही है सर। तो आप ऐसा कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। आपको एनालिसिस करना है ना, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जितने लोग हैं ना, जितने इंटरव्यू दे रहे हैं, अरखा मन्ना है वो भी दे चुका है यहाँ पे 4-5 मॉक। और आपका जो सागर भौमिक है वो भी दे चुका है। और पिछली साल वाले जितने हैं उन्होंने तो दिए ही थे सारे ने, वो सागर धर्राज वो सब दे चुके हैं मॉक। तो अब जो अभी प्रेजेंट जितने दे रहे हैं उन सबको मैंने एक ही बात बोली है, लैपटॉप पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप क्या आंसर देते हो। सबसे मेन ये है। जी सर। ज्यादा लोगों से आप सिलेक्ट से बात करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, मैं एक पॉइंट ये बोलूंगा। ज्यादा माइंड डाइवर्ट होता है कि किसी को 40 मिले किसी को 36 मिले। वो डिपेंड करता है एग्जाम में के ऊपर। आप रूम में गए, आप वहां पे क्या बॉडी लैंग्वेज है आपकी, वो डिपेंड करता है। सबसे मेन बॉडी लैंग्वेज, आप एंट्री किए, आपने क्या बोला। बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं, बहुत से कॉन्फिडेंस होते हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। वो भी एक मायने रखता है यूपीएससी में। अब आप गए, आपने बहुत तैयारी की, उन्होंने दो क्वेश्चन कीजिए, आप नर्वस हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव पॉइंट। सबका अलग अलग होता है, सबका बॉडी अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। वो डिपेंड करता है। बस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मॉक से, आप जिससे भी कंडक्ट कर कांटेक्ट किए हुए हैं उनसे ये डिस्कस कीजिए कि आप मॉक लीजिए। अगर वैसे तो सिलेक्टेड वालों के पास तो टाइम ही नहीं होगा। जो भी ग्रुप में आप डिस्कस करते हो ना, ये अर्था मन्ना है, सागर है, जितने भी है, तनुश्री, ये सब लोग मेरे पे जुड़े, सब मॉक दे चुके हैं, इनके कंप्लीट हो गए मॉक। ठीक है ना? तो मैं यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे वही होता है। और आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने आप को वहां देख चेक कीजिए लैपटॉप में, तब पता चलेगा आप कैसे बोलते हो। आप अपने आप को एनालिसिस करना है ना, तो आप अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कीजिए और फिर अपने देखिए आप बोलते क्या हो और किस लैंग्वेज से बोलते हो आप। वो सारे मेजर पॉइंट होते हैं, तो अपने आप को एनालिसिस करना तो इस तरह से कीजिए आप। सामने वाला बोल रहा है कि ये एनालिटिकल पढ़ लीजिए, टाइट्रेशन पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बस यही आता है सिलेबस में तो। लेकिन आप पढ़ तो सब लेते हैं, आपने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप वहां इंटरव्यू में बैठोगे तब आप बैठने का आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्या है, वो मायने रखता है सबसे मेन। इसलिए दूसरे किसी से ठीक है सर। कंपेयर और वो नहीं है, एक एनालिसिस कर लीजिए और खुद की प्रैक्टिस कीजिए, खुद खुद बोलिए। मतलब सामने जो आप डिस्कस करते हो ना, आप किस पे डिस्कस करते हैं, ये लोग जितने सागर वगैरह ये किस पे डिस्कस करते हैं, साहिल? ग्रुप में? सर ग्रुप में नहीं सर, मतलब सिंगल सिंगल करके ही किया सर, ग्रुप में नहीं किया। किस पे? साहिल भैया के साथ हाँ जी सर। जूम पर? जूम पर नहीं सर, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके। नहीं, जूम मीटिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और उस पर डिस्कस कीजिए, सबसे बेस्ट है। मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, बेस्ट मेथड या तो गूगल मीट या जूम मीटिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, उस पर डिस्कस कीजिए। और डिस्कस आप इतना कर चुके हो तो मैं बस यही है, आपने जो मेन पॉइंट है वो नहीं किया हुआ है, उस पर डिस्कस कीजिए। और डिस्कस ये मॉक की तरह डिस्कस कीजिए। आप एक टॉपिक करके जाइए, फिर ठीक है। आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कीजिए, जिसका ले रहे हो वो उसका, उस पर कीजिए सबसे बेटर। व्हाट्सअप कॉल एक डिफरेंट मेथड, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो तो नेटवर्क वगैरह इशू है, सबसे बेस्ट है। और वो उसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर देखिए आपने क्या आंसर दिए हैं ठीक या है। उसने क्या आंसर दिए हैं, एक दूसरे का एनालिसिस करोगे ना आप इस तरह से। सागर भौमिक ने भी यहाँ पे दिए हैं मॉक, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अभी इतना हाई नहीं हुआ है, क्योंकि उसके भी बहुत सारी चीजें वीक है। मैंने उसको बोला हुआ था कि आप प्रैक्टिस कर लो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत टॉपिक छूटे हुए हैं, टाइट्रेशन में भी है। पूरा क्या डिस्कस करते हो इतना टाइम तो।
तो कॉन्फिडेंस वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए एकदम। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ आपको जी बहुत सर, सी चीजें। ये सर, वो पहले बार मतलब इंटरव्यू फेस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी कॉन्फिडेंस है। साहिल फफरी भैया का कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कि सर ज्यादा है। तो वो सेकंड टाइम दे रहा है। साहिल फफरी। सेकंड टाइम दे रहा है तो हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही। सेकंड टाइम वाले का हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है रिटर्न में मार्क्स कितने हैं, इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ जी सर। तो उसके अब थोड़ा ही मार्क्स तो रह गए थे लास्ट टाइम आप बोल रहे थे उस हिसाब से। वो पुराने है ना, उसकी सर एमएससी कब बाकी की एक है, साहिल के उसकी एमएससी 21 की है ना। हाँ जी सर, 21 नहीं सर, 2019 सर। हाँ उन्नीस 19 में की है, हुआ सर। सॉरी सॉरी हाँ। 2019 की है, तो कितने साल से तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है ना बहुत सालों से। सर ये ऋषि कुमार सर और तनुश्री मलिक, तनुश्री शाह, ये तीनों लोगों का सर मेंस कैसा गया था सर? प्रीलिम्स और मेंस क्या कह रहे हैं, क्या रिव्यू सही दे है रहे हैं सर? इनका। इनका तो अब मेन एक्सपीरियंस तो स्कोर तो वही था, कट ऑफ से ज्यादा है, सही हुआ है। लेकिन इनका इंटरव्यू भी सही है। अब तो मैं करा रहा हूँ ना उसका, कन्वेंसरी सा है उसके, तो करा दिए, 15 मॉक ले लिए। उसका तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। सारी चीजें वीकनेस थी उसकी, वो भी है। तने जो सा है उसका भी चल रहे हैं कंटिन्यू। जो जुड़े हुए मौक, अब इतने मौक हो गए, शुरू में तो बोलना भी नहीं आता था उसको, लेकिन अब तो जबरदस्त चल रहा है परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब तो फाइनल मॉक रह गए हैं सबके। प्रैक्टिस मॉक जितनी ज्यादा करोगे, आपका जो मेथड है वो गलत है। मेथड आप अपना चेंज कीजिए। चेंज ये करना है, गूगल मीट पे कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए, और दोनों एक दूसरे से अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो ना, तो वो उसका एनालिसिस कीजिए, वो उसका एनालिसिस कीजिए, लेकिन जूम के द्वारा सबसे बेस्ट रहता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो ये व्हाट्सएप कॉल और ये कोई ग्रुप डिस्कशन इनसे नहीं होने वाला। ग्रुप डिस्कशन में तो आप कोई भी आंसर दे दोगे, बॉडी लैंग्वेज पता नहीं चलती ना उसपे। टाइम का यूज कर रहे हैं ना, टाइम कम है आपके पास, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम कम है, तो जो भी यूज कर रहे हैं ना तो उसको सिस्टमेटिक से करो, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो। अब टाइम नहीं रहा ओके ना। सर। रिजल्ट तो बहुत पहले आ चुका है, कब का रिजल्ट आया हुआ है। तो वो बात है, अब टाइम कम है तो कम टाइम में आप बस यही कीजिए। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि वो, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस वो भी उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं, ऐसे तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ये भी दे रहे हैं, तनुश्री भी पहली बार दे रही है, और भी लोग बहुत सारे सब मेरे पास जितने जड़े पहली बार। लेकिन वो मॉक दे दे के इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि 15-15 20-20 मॉक हो चुके हैं लोगों के। नहीं आते तो लग, एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरा हो चुका है, एनालिटिकली पूरा सब, पूरा पूरा होल केमिस्ट्री कराई है मैंने। तो उससे क्या है थोड़ा है। तो वही है, प्रैक्टिस कीजिए उनको, जो जिनको प्रॉब्लम होती है आप रिकॉर्ड कर लीजिए और चेक कीजिए आप खुद अकेले में कि आपने क्या बोला है 40 मिनट ओके में, सर। है ना। तो टुडे आज क्या टॉपिक करके ओके आए आप। सर, लगभग तो सर पूरा टॉपिक तो खत्म ही है सर, मैं पहले से ही पढ़ा था सर मेंस का टॉपिक। तो है सर, मैंने नोट बनाया था, वो थोड़ा सा रिवीजन तो करके क्या आया करें, हम है सर। फाइनल मॉक लें, एक तरह का फाइनल पूरा होल सिलेबस। यस सर, यस सर। यस यस। सर, यस सर। यस, लेट बी तो स्टार्ट हफ्ते भर हर दिन आके बेसिक। जोन से सर। यस। यस सर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, जितने दिन बाकी हैं सर, हर दिन अब मैं मॉक दे सकता हूँ सर, पूरा यस, हर सिलेबस दिन का। दीजिए आप। मैं टाइम चेंज कर दो, दो दो मॉक ले लूंगा, जिनके टाइम रह गए ना, जो कैंडिडेट लेट जुड़े हुए हैं उनको दो दो मॉक ले रहा हूँ मैं डेली। डेली दो मॉक ओके सर, लगातार, ठीक है 40-40 मिनट। सर। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, लेट बी स्टार्ट बेसिक, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फुल मॉक फाइनल। I am Subrata Mandal. I am from Jalpaiguri, West Bengal. I have completed my graduation in 2018 from the University of North Bengal, and I have completed my master's from Indian Institute of Technology, ROPAR, in 2020. Thereafter, since 4 years, I have been preparing for combined geoscientist examination. This is my fourth attempt and first interview, and my hobby is singing and traveling. सिंगिंग एंड साइकिलिंग। Traveling, sir. ट्रेवलिंग। Traveling, sir. यस यस यस। यस, योर नेम इज सुब्रता। यस, व्हाट द मीनिंग ऑफ योर नेम, डिस्क्राइब। Subrata means, sir, good devotion, for a good purpose for the society. My devotion is to become a scientist and to contribute for the India. यस, हाउ डू फील अबाउट योर नेम,
Can you describe? Yes, sir. I feel, sir, it is very good, sir. My parents put my name, and sir, I think they uh, uh, teaches they teach me to become a good person, and for the society, I they teach me to contribute for the society. Yes. What's your strength and weakness? My strength is chemical. Strength point is chemical analytical analysis. I have a good theoretical knowledge, and sir, the second one is I can sing classical and modern songs. And third one is I can deal with various government of I have very good administrative ideas of various government institutions. As I completed my post graduation from IIT IIT-ROPAR. And sir, my weakness is I am a little bit slower in communication in English. The second one is I don't know how different reputed institutions like uh, mm, uh, government institutions, for example, in NCSC or NCSC or the UPSC work, how seriously. Though I have a little bit idea, I think, sir, I should improve on it for the to understand the various government sectors. And sir, my third weakness is um, sir, I have to improve my practical knowledge in chemical analysis, and I am trying to improve all of them, sir. Yes. Good. Next, your hobby is singing and traveling. Yes. Can you describe your hobby? Yes, sir. How to use it? Yes, sir. Sir, singing is a very good um, it is a very good thing to recover the mind, and it gives me extra knowledge apart from my chemistry, and traveling gives me a lot of information regarding various places of mm, political, economical, social, and geographical diversities of India. Uh, that's all about it. Singing. Yes. Your hobby is Yes, singing, sir. na? Can you Yes, sir. explain any one song from your side? I can explain all the things. With Only singing, singing, singing. Only one example. example, okay, sir. Sir, I am I am just singing a song of respected Lata Mangeshkar. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ें पहचान है डरे याद रहे नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ें पहचान है
गरे याद रहे. Uh, Yes, good. in these two Nice. songs. Thank you, sir. Good. Next one is your point number third. Second is native place. Your native place is Jabalpur. Yes, I think West Bengal. Yes, na? Jalpaiguri, sir. Yes, Jalpaiguri, sir. Jalpaiguri district. Jalpaiguri. Yes. Yes. How do you feel about your district? Can you describe? And what's your favorite place in your district? Yes, sir. In my district, so it is. I think, sir, it is a very good place and amazing. A lot of diverse place, tourist places are there. For example, sir, Gorumara National Park, and a sanctuary is also beside it, a wildlife sanctuary. And sir, Jalpaiguri Rajbari is there, Rajbari Palace, and sir, Lataguri Forest is also there. And beside it, Himalaya mountain is also here, sir. Starting just the Shivalik part is in this place, sir. And beside this, Jalpaiguri city, the river, very important rivers like Tista is also here, sir. Yes, good. Yes, what the role of in your district in West Bengal? Um, the Jalpaiguri district is a very strategic point of India because it includes the chicken neck portion of India, which connects with the seven sisters of India. And sir, it is the copper mine is also here. The secondly, third one is geopolitical background is very important, as as Bangladesh, Nepal, Bhutan are connected to it. And fourth one is it is the natural plant and animal diversity area in this place. Yes, good. Next one is West Bengal. Yes, what the history of West Bengal and how do you feel about West Bengal? Can you describe? Yes, sir. It is a very amazing state, sir. If we classify the history of West Bengal, then we can classify it as ancient West Bengal history, medieval, and modern West Bengal history. In case of ancient West Bengal history, not too much important incident happened here. But in case of modern medieval and modern West Bengal history, it has wide historical importance and a very important historical background it poses. For example, in the medieval West Bengal history, the Shane and Palas are prominent emperors are also from the West Bengal. And for modern West Bengal history, the Battle of Plassey, from the Battle of Plassey, or Mushid Kuli Khan, first independent ruler of West Bengal, and for the literature purpose, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyaya, and is, and um, Vibhuti Bhushan Bandyopadhyaya, etc. Also Bengal, and first president of was Umesh Chandra Banerjee, who is also from the West Bengal, sir. Fighting the and the and Dina Badal Dinesh also are also from West Bengal, and the prominent leader and the great was Bose is also from West Bengal, sir.
Yes, what the role of West Bengal in our country from 1947 to 2024, last 75 years? Okay, sir. Sir, before independence from the independence, it had a wide role for the industrial purpose as jute industries was very prominent in West Bengal. But after independence, it had lacking of the economic importance because of the infiltration of the Bangladeshi people to the border and increase of the population. Due to increase of population, um, it uh, uh, losses its economic and political importance. It slightly reduces, I think. Yes. Yeah, next number is point number 4, laboratory section. Yes, Okay. laboratory section is basic point is what the difference between quantitative, volumetric, grammatic, instrumental analysis. Explain with the example. Yes, sir. Qualitative analysis includes the identification the part of chemicals. For example, uh, in case of organic chemistry, the functional group identification is included in the qualitative analysis. For example, NO2 or carboxylic acid group or OH group detection is included in the qualitative analysis, and the various types of acidic and basic radicals identification is included in the qualitative analysis. But if we talk about the quantitative analysis, the amount of that compound or the basic acidic or basic radical present in a solution or the sample is called the quantitative analysis. The qualitative analysis can be done by various instrumentation and analytical techniques like acid-base or complex symmetric titration or radix titration, or the instrumentation techniques like XRF, ICP, or flame photometry, etc. And the quantitative analysis can be performed by both analytical and instrumentation techniques like complex symmetric titration. We can estimate iron or any general basic radicals by complex symmetric titration. Um, and in case of the instrumentation, I think the best method is the instrumentation technique, because the ICP machine can detect more than 70 elements in a very accurate way. And sir, ICP ICP machine can measure the quantitatively various acidic and basic radicals in ppb ranges. Yes, how to detect nitrogen, sulfur, halogen in a lab? How to detect bromine? Yes, sir. In the lab, nitrogen, sulfur, the nitrogen and the sulfur have comparatively. Hello, Yes, yes, carry on, hello. carry on. Yes, sir. Nitrogen, sulfur, bromine, and sir, another is. Iodine. Okay, sir. So nitrogen and sulfur has comparatively lower atomic weight. So I think, sir, this by the um, nitrogen can be identified by the chemical analysis like sir, instrumentation technique or sir, analytical technique. Sir? I should take Detection. detail about it.
Only detect. Which test is follow to nitrogen sulfur L. Okay, sir. So nitrogen test can be identified by such a Lassine test. So the sample can be fused by sodium, and then the solution, Lassine solution paper can be produced, and then sir, it shows the Prussian blue color with the addition of sodium ferro ferro ferrocyanide to the solution. And for sulfur, um, I think sir, sulfur can be reduced by volatile, um, by introduction of hydrogen or acidic solution, so that H2S gas can be released. So this can be analyzed by inductively coupled plasma spectroscopy. Um, and sir, iodine is a metal. So I think sir, it can be detected by ICP machine, sir. Higher atomic numbers. Bromine test. How to detect bromine in a lab? Sir, in terms of atomic form or sir, molecular form, sir? Atomic form. Detect test. For molecular form, Testing detect of yes, the sir. bromine in a lab. Okay, sir. Bromine can be detected by the Aegis a silver nitrate solution. I think, sir, in presence of uh, the bromine water can be firstly reduced to bromine Br minus with some reductant or sodium or the potassium metal. Then, sir, it can be precipitated by the silver nitrate solution. Gravimetrically, it can be quantified. And, sir, with observing the Cardi white Cardi precipitation of the silver bromide, we can confirm it that bromine is present. Yellow cardi precipitation, and sir, with addition of ammonium hydroxide solution, the precipitation will be disappeared, sir. So by this method, we can identify the bromine, sir. Yes. Next is functional group. How to detect functional group in a lab? First one is aldehyde ketone. Aldehyde and ketone can be uh, identified by Tollens reagent. If we add Tollens reagent, then CHO, that means the aldehyde group will be oxidized to carboxylic acid group, or that means the COO minus. And the silver mirror will appear. So observing the silver mirror, we can conclude that the CHO group is present. And in case of the carbonyl group, if we add the Tollens reagent, it will not show any silver mirrors. So we can identify the two from the from two different solutions. Next one, phenol. How to detect phenol in a lab? Phenol can be identified by ferrichloride solution. If we add the ferrichloride dropwise to the phenol, then sir, it will show purple color colored solution, sir. Yes, this one is qualitative quantitative analysis. Volumetric analysis. What is volumetric analysis? Volumetric analysis is a part of analytical chemistry. So, sir, when a reagent is added to another reagent or any chemical substance, by so that when suddenly chemical properties
with addition of the one reagent to the chemical substance sample or solution, then suddenly chemical properties will change. So that observing that point, we can analyze or quantify a sample. So this is called volumetric analysis. What is titration? And how many type of titration? Titration can be a lot of a number of types. For example, gravimetric titration precipitation titration, redox titration, acid phase titration, complexometric titration, potentiometric titration, conductometric titration, animal titration, etc. Yes. First is what is the acid weight titration? What the main application of acid weight? Acid base titration, the application of acid base titration is to find out the concentrations of acid or base in the analytical chemistry. And the acid base titration is that by with taking the standard NaOH or HCl solution, we can add dropwise to the NaOH or the sample NaOH or HCl solution, so that after neutralization point, at the neutralization point or equivalence point, the sudden pH will come to the 7. So by conductimetric or conductometric method, we can predict the that equivalence point. So this is the acid titration to estimate acid or base concentration of a solution. Yes. Next one is gravimetric analysis. What the main application of gravimetric analysis? Gravimetric analysis is a kind of precipitation method. We can separate two or two more ions from a sample solution by a selectively precipitation technique. So this is called the gravimetric precipitation or gravimetric analysis. So the main applications of gravimetric analysis is to is to quantify different types of ions or the sample by itself. Yes, gravimetric is basic point is solution, solubility product. Yes. What is solution? Basic point is what is solution and how many type of solution? Okay. Solution solution means, sir, when two or more substances are mixed with each other, then the physical properties of the of each component um, individual physical properties disappears and combines and homogeneous physical properties appears. This is called the solution. Sir. Solution can be of different types. For example, on the basis of the phase, we can classify the solutions as the solid solution, solid liquid solution, solid gas solution, liquid solution, and liquid gas solution. And another is a gas solution. Sir. Yes, good. Today is good work from your side. तो अच्छा एक्सप्लेनेशन है, डे बाई डे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। आज पूरा क्लियर सारी चीज हो गई। तो डेली आप ज्वाइन कीजिए, आपका टाइम 8 है क्योंकि आप शायद बिजी रहते हैं इसलिए, ठीक है। बाकी अदर कैंडिडेट है सर तो दिन में सबको भी मैंने। सर शाम को कभी कभी सर पढ़ाना होता है, तो यस यस, इसलिए सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कोई सर। नहीं, मैंने और उनको चेंज दोपहर में फ्री। चेंज कर दिया है, टाइम चेंज कर दिया, आपका टाइम है 8 PM, यस ना। तो डेली ओके ज्वाइन कीजिए, बाकी हम यस टाइम सर, ज्यादा मिलेगा तो हम डबल डबल मॉक ले लेंगे, यस। ओके। यस सर।